Hello, everybody. How are you guys doing? I hope you guys are doing great, taking care of your health and focusing on your studies because this is grade 12. Now, we are going to start today with the fourth exercise of grade 12 CBSE board 7th chapter, which is integration. The fourth exercise of the chapter integration. We have finished 3 in 7.1 May in the exercise 7.1 we saw normal normal use of formulas in 7.2 we saw how to solve sums with the help of substitution method. In 7.3 we saw how to solve sums with the trigonometric functions. So, we have saw the substitution method and we saw how to integrate trigonometric functions, correct? तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. इंपॉर्टेंट सम्स भी लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट वीडियो में दे दिए थे. आई होप यू गाइज हैव सॉल्व द एक्सरसाइज. और अगर एक्सरसाइज सॉल्व करी है और अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स. एनीवे, एक्सरसाइज सोल्यूशन का जो वीडियोस है वो इट विल टेक अ लिटिल व्हाइल, बट पहले एक्सप्लेनेशन वी विल फिनिश एवरीथिंग. ओके, so first we will finish the explanation and then we will go ahead with the exercise solution videos. वैसे तो we have done the exercises once, but yes, to make the videos it will take a little while. Okay, since I'm making the videos of the explanation first, so you can at least refer to it and understand at least how to solve. Because just to make revision videos and then when you have if you have a problem in a particular exercise, then that's going to be difficult. So instead of making a 3-4 hours long a video on a revision, which is, I know, which is also helpful, lekin I prefer to make videos which are per exercise, so you can typically pick up that one exercise and check. I'm trying to match the explanation in the videos to what we have done in the class so that you all don't find anything different there. You remember, you recollect to what we done, and you take your notebooks and you refer to the notebooks and see what is it. Okay, so today we are going to start with 7.4 exercise of integration. Okay, this 7.4 exercise is about integration of particular cases. This is integration of particular cases. Integration of particular cases. What type of cases? Kya hai? We all will see that. Integration of some particular cases. Now, what are these cases and how are we going to deal with them? Or particular functions, particular forms. आप कुछ भी बोल सकते हो इसे. Finally, we are going to see how they are going to be special. Correct? Okay. Special type of forms, special type of functions. Okay, what are those functions? So special functions are, we are going to see how to integrate functions like 1 by q. What is this 1 by q? Q kya hai? 1 by q dx. Ya fir we will see how to integrate 1 by root of q dx. Or we will see 1 by L of q dx. देखते क्या है L, Q and all that. If you have attended my class personally, you will know it. And if you do not, you have not attended the class personally, then we will just in a minute's time, we will see what this is, correct? यहाँ पे L is a linear equation. A linear function, sorry. And Q then becomes the quadratic function, correct? Clear है? तो क्या? We are going to see how to integrate your functions which are linear functions and quadratic functions. So 1 by quadratic function, 1 by root of quadratic function, linear by quadratic function, and linear by root of quadratic function. Okay. For this, we need some formulas. We will write these now and then also check if we can remember them easily. क्योंकि formulas मैं लिख के तो दे दूंगी, याद रखना तो एक कुछ तो टेक्निक है. आइदर आप टेक्निक निकालो या फिर नहीं होती है तो मेरा टेक्निक यूज करो. एनीथिंग, करेक्ट?
देखो, प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूलाज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, करेक्ट। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये फॉर्मूलाज क्या है एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज फॉर्मूलाज, दैट्स व्हाट यू हैव टू सी, करेक्ट। सो लेट्स सी व्हाट दिस फॉर्मूलाज आर. So these are, so let's write down formulas for 7.4 क्या है ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए. 6 फॉर्मूलाज है, 3 3 3 without the root and 3 with under root, correct. So what we are going to do is we are going to make 2 parts. We'll write 3 formulas this side. The first formula is 1 by, that is integration of 1 by x square minus a square dx. Okay, that is, देखो ये 1 by q वाला फॉर्म है, करेक्ट. दिस इज इक्वल टू 1 by 2a. एक बार लिखेंगे एंड देन आई गिव यू द टेक्निक क्या है यहाँ पर. ओके, 1 by 2a log of modulus x minus a by x plus a plus c, correct. Second, this is integration of 1 by a square minus x square. a यहाँ पे एक कांस्टेंट है, करेक्ट. dx, this is equal to 1 by 2a log of modulus a plus x. a plus x ले लो या x plus a ले लो, it's one and the same. a plus x by a minus x plus c. And the third one is integration of 1 by a square plus x square dx. That's equal to what? That's equal to 1 by a tan inverse x by a plus c. So the left hand side formulas are all with denominators which are not under the root. Now we will see what are the right hand side formulas. Right hand side formulas लिखेंगे हम लोग एक अलग कलर से so that we identify them, correct. तो फोर्थ फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर? इट्स गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ऑफ, सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx. That will be how much? That will be log of modulus x plus, ये जो रूट में है वही आएगा, it is root of x square minus a square modulus plus c. Then fifth is what? It is integration of, यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसी को रूट के अंडर ले लेंगे, करेक्ट. इट इज इक्वल टू रूट ऑफ a square minus x square, correct. This is equal to dx, sorry. This is equal to sine inverse x by a plus c. And next we have 1 by root of a square plus x square dx, which is equal to log of modulus x plus root of a square plus x square plus c, करेक्ट. एक बार आप देख लो क्या है, प्रॉपरली समझ लेना. 3 type of, one is with root and the other is under the root, correct. Once wait for a while and copy this properly, develop your own method. Pattern तो है, check if you can identify your pattern, correct. Okay, so we'll not waste much time. But these formulas are there and we have to implement this formula. So we will directly take one example here. Example लेते हैं कि suppose we have integration of 1 by x minus 16 dx. Perfect. तो यहाँ पे which formula will we use? This will be by using formula. I'll put it here. Okay. Which formula are we going to use? We are going to use by using, we have written the formulas, by using integration of 1 by, sorry, this is x square.
Okay, 1 by x square minus a square dx. So this is going to be what? This will be 1 by 2a log of x minus modulus x minus a by x plus a मॉड्यूलस प्लस सी. पैटर्न क्या है? अगर ये x माइनस है तो ऊपर न्यूमरेटर में x माइनस ए आता है. दैट इज द पैटर्न यू हैव टू रिमेंबर. 1/2 है तो सारे फॉर्मूलाज को चेक कर लेना. ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व दिस. तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? तो बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला, आपको समझे इसके लिए मैंने इतना बड़ा लिखा है, बट वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ दिस फॉर्मूला बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इट देयर. करेक्ट? And then we can use this space to solve the questions. But this is the formula that we are using here. So we are going to write here by using. And आप पॉज करके देख सकते हो. आपकी बुक में आप उसको बड़ा लिखो, हाईलाइट करो, जो भी करना है. यू हैव टू डू दैट, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. करेक्ट? ओके, तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस? सो दिस वी कैन राइट डाउन एज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डीएक्स. तो करना ही कुछ नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला में इंटरसेप्ट करना है. दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी 1 बाय 2a, दैट इज इक्वल टू 1. अच्छा, सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे a क्या है? a विल बी 4, है ना, क्योंकि a स्क्वायर है तो 4 आएगा. करेक्ट? जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है. राइट, सो दिस विल बी व्हाट? 1 बाय रूट ऑफ 1 बाय 2 इंटू 4. सॉरी, इंटीग्रेशन. ओके, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू 4, then log of modulus x minus 4 by x plus 4 plus c. Correct? Bas khalas, this is your answer. 1 by 8 log modulus x minus 4 by x plus 4. Correct? Plus c. This is your answer. I hope. पहला सम है, पहला सम हमेशा आसानी होता है. थोड़ा थोड़ा देखते हैं, धीरे धीरे we will progress further. Correct? I think every sum let us take a fresh page ताकि calculations will not be difficult. Okay, you can pause this video, you can write down the question, understand it, redo it. You can do it with your own pace. So that's going to be the benefit that you have when you check the videos. Correct? All right. Let's see one more question. Suppose we have integration of dx by root of 2x minus x square. 2x minus x square. Okay. Now it is very clear that this function is in the form of what? This function is in the form of 1 by root q. Correct? Lekin 1 by root q mein, whatever formats we have, you can go back and check your formulas that we just wrote. Whatever formulas we have, this cannot be solved. We have to bring it to that form. How do we bring it to that form? So just pay attention. This is going to be dx by, in the numerator, see, it has to be x square minus a square, or a square minus x square, or it has to be a square plus x square. It is not in any of the forms. So we have to bring it to that form. How are we going to bring it to that form? So we can write this down as 2x minus x square. We can write down plus 1 and minus 1. Okay. Then what will happen? This is going to be integration of dx by root of. See, if you actually check properly, if you take minus outside, okay, or rather, if you can do it like this, I'm going to rearrange the entire thing. Okay. So we can write down 1. We can write down 1 minus 1 plus 2x minus x square. Now we can write this on the integration of dx. Integration of dx divided by, देखो यहाँ पर आप minus 1 minus take outside the bracket, then you will have 1 minus 2x plus x square. Correct? See, 1 minus 2x plus x square. This is x plus x minus 1 the whole square. Correct? That means this is dx is equal to, sorry, dx by root of 1 minus 1, or this is x minus 1 the whole square. या फिर आपको समझ में आ रहा है? This is x square minus 2x plus 1. So this is x minus 1 the whole square. I hope you guys are getting it. Correct? So it's going to be
x minus 1 the whole square. Now this 1 also I can write down as square. Correct? So अभी अपना आ गया a square minus x square के फॉर्म में. Correct? So just a minute. Okay. So now what is the form that we have it in? Let us see. See the form that we have it in going to be 1 minus x square. मतलब which is the, see यहाँ पे आप substitution method भी use कर सकते हो. So we can say let 1 minus x equals t. Correct? अगर आप 1 minus x equal t लेते हो तो वहां यहाँ पे कितना आएगा? dx by dt is equal to 1. Correct? 1 is equal to dt by dx. Differentiate करोगे ना दोनों तरफ. So you will get dx is equal to dt. तो now आप substitution यहाँ पे use करो. You have integration of dx by 1 square minus t square. अच्छा dx के जगह पे क्या लिखोगे यहाँ पर? This is going to be 1 by 1 square minus t square into dt के जगह पे, dx के जगह पे सीधा आप dt लिख सकते हो क्योंकि dx is equal to dt, same value. Correct? Now what are you going to do? dt. So 1 a square minus x square. a square minus x square का फॉर्मूला क्या है अपना? So integration of 1 by root of a square minus x square dx. This is equal to what? This is equal to sine inverse x by a plus c. Correct? This is the formula that we have. So we can say by using. Correct? ये formula इसे हम वापस एक बार छोटा कर लेते हैं because we need place to solve the question. Okay? ये बार बार if you keep writing the formulas while you're doing the sum, it is going to be easy. Correct? तो okay. So कैसे करेंगे इसे अभी? 1 minus t square, x के जगह पे t डाल देंगे. Sorry, यहाँ पे I forgot to put the root. यहाँ root है actually. Okay. So this will be what? Now this will give you what? Answer will be sine inverse t by x by a. अपना x is t, so this will be t by 1 plus c. बस इतना ही आंसर है. आप t की वैल्यू डाल देते हैं. It is equal to sine inverse x minus 1 by 1. x minus 1 by 1 मतलब उतना ही आएगा plus c. So this becomes your answer. Getting it? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ये थोड़ा नीटली लिखेंगे. This I did not write the root. थोड़ा सा नीटली लिखेंगे ताकि आपको पता चले. So this is equal to root of actually 1 square minus t square. Correct? तो ऐसे करते हैं ये सम्स को. ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ज्यादा डिफिकल्ट हम उन्हें सोच कर बनाएंगे भी नहीं. आसान है. मस्ती से करेंगे, आराम से करेंगे. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल एंड गो अहेड. करेक्ट? So let's go to the next example. So let's see what is the next example यहाँ पर. So let's say this is integration of dx by x square minus 6x plus 3. करेक्ट? क्या 3 नहीं है, ये गलती हो रही है मेरे से. This is 13. ठीक है? See, this is what form? This is 1 by quadratic equation. लेकिन ये केस में we will have to check. This is 1 by quadratic, but it is not in the form that we want. अपने पास तो 3 ही forms है. Correct? X square. What are the forms that we have? And we have to get it in that form. What are the forms? We have 1 by x square minus a square. We have 1 by a square minus x square, or we have 1 by a square plus x square. Either तो ये है या फिर इसका रूट है. तो ये फॉर्म में अगर ये फॉर्मूला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो वी हैव टू गेट इट इन दिस फॉर्म. क्योंकि जब तक ये फॉर्म में हम लाएंगे नहीं तब तक वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूला दैट वी हैव. तो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? सो देयर इज वन शॉर्टकट टू फिगर आउट. इसको 10th में कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक मेथड था जो शायद आपकी बैच को कैंसिल ही कर दिया था वो मेथड को. तो वो फॉर्मूला, वो फंडा यहाँ पे यूज करना पड़ता है हमको. बट वी विल सी हाउ टू डू इट. तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पर एक स्टेप वाइज एक देखते हैं. ओके, स्टेप 1, व्हाट इज द कोएफिशिएंट? ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. पहले तो आप देखोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है. कोएफिशिएंट एक्स का हियर इन दिस केस इट इज इक्वल टू 6.
करेक्ट. नाउ सेकेंड स्टेप क्या करोगे आप? इन द सेकेंड स्टेप you will take the coefficient of x, you will divide it by 2 and you will square it. करेक्ट. मतलब ये क्या आएगा देखो यहाँ पे, ये स्टेप 2 में, दिस इज स्टेप 1 और स्टेप 2. स्टेप 2 के बाद आंसर कितना आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 और इसका पूरे का स्क्वायर. तो ये आएगा 3. इसका आंसर आएगा कितना? 9. आर यू गाइस गेटिंग इट? करेक्ट. तो ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पे यूज करना है. 9. तो 9 कौन सा नंबर है? ये जो 9 आएगा आप करोगे +9 -9, तो आपका एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, इन विच यू विल गेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इन द फॉर्म दैट वी वांटेड, ताकि हम उसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सके. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? चेक. इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x² -6x + 13 + 9 -9. ठीक है. नाउ रीअरेंज करेंगे ताकि वी कैन जस्ट यूज इट. ओके. सो दिस गोइंग टू बी dx बाय x² -6x + 9, एक ब्रैकेट में डालते हैं. ओके. और +13 और -9 अलग रखते हैं. ठीक है. See what are we left with? We have dx by, what does this look like? Doesn't this look like x - 3 the whole square? Correct. So this is equal to x - 3 the whole square, and this is what? This is equal to +4. Correct. 13 - 9 will give you 4. That means what do we have? We have, this is integration of dx by x - 3 the whole square -2 square. अब ये फॉर्म तो हमारे, you know, this is something that the formula that we know, which is x² - a². Correct. So yes. Okay, I'm going to take this and convert this into a small box, ताकि एक कुछ ना कुछ तो बोर्ड में हो जाता है बार बार. Okay, so I can use this place for solution. Correct. I hope all of you understood what to do. This reference के लिए है, so I'm going to write it here. This is how the 9 comes. Correct. So you can keep it there. And ये मेथड हम लोग बहुत यूज करेंगे, जहां पे we will have to find out the coefficient of x and then use it further to complete the square. Correct. Now what? Okay, so ये प्लस है. Okay, क्या करेंगे यहाँ पर? इंटीग्रेशन. So now let us take let. Normally what we do, we will just use the substitution method. So we will have let x - 3 equals t. So therefore what? Therefore 1 is equal to dt by dx. Correct. So dx is equal to dt then. Clear है? Right. So now substitution करते हैं. Integration of dt by dx के जगह पे तो dt यूज करेंगे, plain and simple. dt by t² + 4 which is equal to 2 square. Correct. तो फॉर्मूला कौन सा यूज किया फिर हमने? फॉर्मूला ग्रीन में लिखेंगे. फॉर्मूला कौन सा यूज किया? विच फॉर्मूला आर वी यूजिंग हियर? फॉर्मूला इज dy by dx, sorry, integration of dx by, this is x² + a². Correct. This is equal to what? 1 by a tan inverse x by a plus c. याद है? Okay. So this is by using. Okay. So once you get your by using thing, then उसको तो सिर्फ implement ही करना है. So this is going to be what? Integration तो निकल जाएगा. This is going to be what? 1 by a. A अपना 2 है. 1 by 2 tan inverse t by a. Correct. T by 2. T by 2 plus c. Then we bring the t back to the original form, which is equal to 1 by 2 tan inverse t के जगह पे क्या डालेंगे? x - 3 by 2 plus c. Perfect. So this is how we do the sums. Okay. ज़्यादा difficult नहीं है ये. चलो. Correct. Let's go to the next one now. You can pause this video. You can check this solution. Try to do it yourself. Verify it. आराम से अपनी मस्ती में करो. ठीक है ना? आप अगर रिवाइज कर रहे हो इसको तो यू कैन गो थ्रू इट.
फिर पूरा का पूरा एक्सरसाइज होने के बाद पूरा का पूरा explanation, after you finish this explanation, then again you can watch then again you can solve the sums and then see, or you come back to this entire thing and see if you need any help there. Correct? So let's go to the next example now. Okay, hope you guys have copied this. चलो next करते हैं. Next example क्या है? We have कभी कभी okay. क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dx by 3x square plus 3x square plus 13x minus 10. कैसे करेंगे इसको? करेक्ट, आसान है. सी अगेन वी हैव डिफरेंट फॉर्मूलाज. कौन से फॉर्मूलाज है? एक्स स्क्वायर प्लस ए, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. दिस does not fit into anything. So again, what we are going to do? Again, we will take the coefficient of x. Correct? So we have to do this. We'll take the coefficient of x. Coefficient of x क्या है? Coefficient of x is equal to 13. Correct? Then what you will do? You have to divide this by 2. So next step क्या है? Which is 13 divided by 2, and we are going to square the whole thing. Correct? क्या बचा अपने पास? This will we have 169. Oh, 1 second, ना ऐसे नहीं कर सकते. All right, sorry. See this 3. We can take the coefficient of x only when this is x square. So first of all, we have to bring this to x square, correct? So first we will get the 3 outside the bracket. We cannot use this like this. See, understand, completing the square is possible when your equation starts or your function starts with x square. But here we have a 3 to which we have to get rid of the 3. So what we are going to do, we will take here integration of dx. We will take 3 common. If you take 3 common outside, this is going to be, sorry, this will be x square plus 13x by 3 minus 10 by 3. Correct? ये जो 3 है, we can bring it out of integration. Correct? 1 by 3 constant रहेगा. And now inside you will have x square plus 13x by 3 minus 10. अब इस stage पर minus 10 by 3. अब now at this stage you will see what is the coefficient of x. That's equal to 13 by 3. And now you have to divide it by 2 and then square it. So this is going to be 13 by 3 multiplied by 2, and you square this. That will give you 169 by 6 ka square, which is going to be 36. Perfect. That means what? What is this number? In this given function, you will plus 169 by 36 and you will minus 169 by 36. Correct? That number we have to identify, because of which we will get this into a required form. So let's see. So we have 1 by 3 integration of dx divided by x square plus 13 by 3x plus 10 by 3 minus 169 by 36 plus 169 by 36. Correct? Perfect. 169 by 36, 169. Sorry, 169 plus 36, 169 minus 36. तो इसके छोटा करके रख देते हैं इसको. That is what we have done. See, these are things which you should do in the rough work, but then I wanted to keep it near the relevant steps. So when you are seeing, this is where we have done that here, and then we have used it in the next step. Correct? Yeah, stage to करके. All right. So basically, now if you see, we are going to have 1 by 3. Now rearrange your elements inside in the denominator. That's going to be what you will take x square. Sorry, we have x square plus 13 by 3x into plus 169 by 36. ये एक bracket में we will take. Correct? And another bracket will have 10 by 3 minus 169 by
36. Are you guys getting what we are doing there? Correct? पता चल रहा है धीरे धीरे क्या हो रहा है? Okay. So now let's see how we can do this further. So this is going to be 1 by 3. This is 1 by 3 integration of dx. Now in the denominator, see this is actually x plus 13 by 6 whole square. Correct? X plus 13 by 6 whole square minus, here you'll find the LCM. LCM is 36. Correct? 36 meaning you're going to have you divided by 12. That's going to be 120. 120 plus 169. Correct? Now 120. 120 minus 1 second. 120 minus 169 ये कैसे आ रहा है? गड़बड़ हो गया क्या? It's equal to 12, 13, 3 the 12, and that's equal to 120. 120. Wait, let's do one thing. 120 plus 169 is 289. So here what we will do is, 1 second, I want to rewrite this so that it becomes a little easy. So this is going to be integration of 1 by 3. This is dx by, it's going to be x plus 13 by 6 the whole square minus into bracket, let's take 10 by 3 plus 169 by 36. So now it becomes, क्योंकि we needed this as a square और वो calculation के वक्त I realized कि वो square नहीं आ रहा है. So that is why. So this is equal to square minus, अब यहाँ पे 12 आएगा. So this will be 120 plus 169. That's going to be 289. 289 by 36, correct? It's going to be 289 by 36. 289 किसका square है? 289 17 का square, correct? So it's going to be 1 by 3 integration of dx by, this is going to be x plus 13 by 6 the whole square minus, this will be 17 by 6 the whole square. So now this becomes what form? This is x square into, sorry, x square minus a square. So वापस what we'll do? We'll say let x plus 13 by 6 equals t. That means 1 आएगा. 1 is equal to dt by dx. This will imply that dx is equal to dt. Correct? Are you guys getting it? काफी आसान हो गया अभी तो मेरे ख्याल से. I think you guys have got the hang of it. कुछ करने जैसा है नहीं यहाँ पर. Getting it? So what we are going to do here further? किसको किसको पता चल रहा है? आगे क्या आ रहा है? Substitution लगा देना है. Correct? So what is that substitution going to be? This will be integration of dx, no, dt by dx ना, तो dt by t square. T square कितना आएगा? Sorry, this one, this will be t square minus 17 by 6 the whole square. Correct? Formula तो हमारे पास है. Formula क्या आएगा? This is equal to, डायरेक्टली लिखेंगे, this is equal to 1 by 3. देखो फॉर्मूला हमको पता है क्या है. फॉर्मूला लिखे क्या आपको पता चलेगा? फॉर्मूला इज 1 by x square minus a square. That is 1 by 2a, 1 by 2a और log of modulus x minus a plus c. आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो यहाँ पर. लेट्स राइट डाउन. करेक्ट? by using what is that? Integration of 1 by x square minus a square dx. वो क्या है? 1 by 2a log of modulus x minus a by x plus a modulus plus c. Correct? This is what we have to use. तो ये फॉर्मूला आपको लिखना चाहिए. बार बार लिखो इसे. बार बार लिखोगे तो एग्जाम के वक्त ज्यादा टेंशन नहीं आएगा. Only by hearting the formulas without implementing them is of no use. Please remember this. It is not going to help you at all. You will only be confused with that kind of method. So anybody who tells you कि formula की book रखो, ये करो, वो करो, वो ऐसे कुछ काम नहीं आता है. Okay, चलो let's see. Now what is that we have? तो formula को straight use करना है.
इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, तो ये इतना कितना आएगा 1/2a. व्हाट इज आवर a? Our a is 17/6, correct? This is going to be 1/3 पहले लिखेंगे ना बाहर, 1/3 we cannot forget. So it's going to be 1/3 or in there. What will you have? 1/2a, 1/2 into 17/6, correct? Log of modulus t minus 17/6 divided by t plus 17/6 मॉड्यूलस प्लस सी. अब इसको आगे सॉल्व करना है हमको, करेक्ट? तो इट इज नॉट ओवर हियर. कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 3 आ गया, करेक्ट? और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा. विल ओपन इट लेटर ऑन. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी, नाउ दिस 3 इज गोइंग टू कम इनसाइड. इफ यू ओपन दिस 3 तो ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई है. सो फाइनली यू विल हैव 1/17 log of the original value of t is actually modulus t का वैल्यू क्या लिया हमने? t का वैल्यू t हाँ x प्लस, ओके, x प्लस 13/6 minus 17/6 divided by x plus 13/6 plus 17/6 modulus plus c, correct? तो can we solve this further? क्या आएगा ये? This will be 1/17 log of modulus 13 minus, this will be -4, correct? So this will be -4/6, correct? ऐसे करते हैं. It will be x minus 4/6 divided by x plus 30/6. कुछ भी मत करो, 6 को ऐसे ही रहने दो बिकॉज वो हमको काम आएगा टू कैंसिल, क्योंकि वो अगर आप कैंसिल कर दोगे अभी तो बाद में वापस एलसीएम निकालना पड़ेगा, करेक्ट? So just we'll just hold on to this right now. So I'm going to shift the board a little bit, then we'll minimize it and then I'll show the whole thing. Okay, I hope you guys are with me here. Then I'll minimize it and then you can see the whole sum together. Okay, so this is going to be plus c. So now let's see, we'll take the LCM here. There's going to be 1/17 log of, this is going to be 6x minus 4 by, ये 6 दोनों निकल जाएगा. आपके नीचे क्या बचेगा यहाँ पर? 6x plus 30, करेक्ट? ये दोनों मॉड्यूलस प्लस सी. गेटिंग इट? यहाँ पे यू कैन टेक 2 आउट. 1/17 log of modulus, यहाँ पे यू कैन टेक 2 आउट. दिस इज 3x minus 2 and divided by, I'll minimize the board after a while, 1 second. और यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी एक 2 बाहर निकाल देते हैं. So you will have 3x plus 15 मॉड्यूलस प्लस c. ये 2 और ये 2 निकल जाएगा और आपका आंसर क्या आएगा? 1/17 log of modulus 3x minus 2 by, यहाँ पे आप 3 बाहर निकाल सकते हो. दिस कैन बी 3, सॉरी, दिस कैन बी x plus 5 मॉड्यूलस प्लस c, करेक्ट? ना यहाँ पे थोड़ा लॉग का एक फंडामेंटल लगता है. आई एम गोइंग टू मिनिमाइज दिस स्क्रीन. आई होप यू गाइस आर एबल टू सी दिस स्क्रीन. आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस अप टिल हियर, करेक्ट? यहाँ तक कॉपी करो. आई एम गोइंग टू वेट फॉर 2 minutes एंड देन वी विल टेक इट अहेड, क्योंकि ये आंसर ऐसे मैच नहीं हो रहा है. ये आंसर ऐसे मैच नहीं हो रहा है. और फंडामेंटल हियर इज टू मैच अवर आंसर विद द टेक्स्ट बुक. तो ये आंसर टेक्स्ट बुक का नहीं है. हम लोग आएंगे अभी टेक्स्ट बुक के आंसर को. यहाँ तक कॉपी कर लेना आप, करेक्ट? देखो, नाउ दिस 3, दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड. कहां से? अरे ये लॉग है ना. लॉग का वी विल यूज द फंडामेंटल ऑफ लॉग हियर, करेक्ट? कैसे? बेसिकली देखो, ये 3 बाहर आ सकता है. सी, एज पर लॉग रूल्स 1/17 log 3,
we can use there like this. 1 second. See, according to the log rules, okay, according to the log rules, 1 by 17 minus log 3. This will give you minus 1 by 17 log 3. Correct? So that means ये जो पूरा फिगर है ना, दिस इज योर कांस्टेंट. करेक्ट? तो ये जो 3 है वो निकल जाएगा. तो आपका जो फाइनल आंसर है ना, ये 3 और ये 17 इफ यू टेक इट इनसाइड 1 by 17 log 3, अगर आप इसको लगा दो तो this entire thing will be, this 3 will become as a constant. So final answer जब आपका आता है, so your final answer will be constant minus constant will give you a constant. Correct? एक constant में से दूसरा constant जब आप minus करते हो तो you get another constant. So ये 3 in the denominator will be removed. That will be 1 by 17 log of modulus 3x minus 2 by x plus 5. कहाँ से? ये will be subtracted from C. This will be subtracted from C. तो C से जब subtract होगा C minus 3, that will give you another constant. So that is how it will be there. Correct? थोड़ी अच्छी तरह से लाइन लगाते हैं तो ठीक ठाक लगेगा. करेक्ट? Let's go to the next question now. Yeah, I hope you guys are getting it. So let's see. Not very difficult, yeah? What do you think? Okay, let's see. Okay, so now we have integration of dx by root of 5x square minus 2x. करेक्ट? नाउ देखो हमारे पास ये रूट है. दिस इज द रूट. वी हैव, इफ यू सी आवर इंटीग्रेशन ऑफ 1 by root of quadratic function dx. करेक्ट? तो वी हैव ओनली 3 टाइप्स, राइट? आई ऑलवेज कीप टेलिंग यू. क्या है? इट आइदर हैज टू बी 1 by root of a square minus x square dx, or it has to be 1 by root of x square minus a square dx, or it has to be 1 by root of a square plus x square dx. This does not fall in any of them. Correct? So we have to now bring it to this situation. So how are we going to bring it to this situation? पहले तो ये इसको देखना कैसे वो समझो कि आपको इसको यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप 0 भी डाल सकते हो. वैसे तो जरूरत नहीं है. वी कैन वर्क विदाउट दैट. Correct? To take the coefficient of x and then use the fundamental that we decided, we don't need this 5. Correct? So we have to take the 5 outside. So we can say this is equal to dx by root 5 बाहर आएगा, जो we can directly take out of the integration. Correct? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ, कैसे आएगा देखो. 1 by dx root of, तो यहाँ पे 5 अगर बाहर निकलेगा तो देन आई विल हैव x स्क्वायर माइनस 2 by 5x. करेक्ट? ये जो रूट 5 है ना, तो उसको हम लोग फिर इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं ना, रूट 5. एंड देन इनसाइड वी विल हैव dx by x स्क्वायर माइनस 2 by 5x. अब फटाफट फटाफट कर सकते हैं. करना क्या है? नाउ यू कैन डू इट मेंटली. अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं. करेक्ट? x का कोएफिशिएंट 2 by 5 divide by 2, that is equal to what? And square divide by 2 मतलब 2 by 10. Correct? 2 by 5, 2 by 5 multiplied by, divide by 2 मतलब multiplied by half ना. 2 by 5, sorry, देखो 2 by 5. करेक्ट? उसको आपको 2 से डिवाइड करना है और स्क्वायर करना है. ये 2 निकल जाएगा, आपका आएगा आंसर 1 by 25. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको क्या करना है? 1 by 25 क्या है? प्लस 1 by 25 माइनस 1 by 25. करेक्ट? इसकी अब जरूरत नहीं है. आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. ये डायरेक्टली करते हैं. सो वी हैव नाउ 1 by root of 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx by x square minus 2 by 5x plus 1 by 1 by 25 and minus 1 by 25. करेक्ट? इसे तो रूट भूलना नहीं चाहिए, वरना फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, सो देन दैट इज व्हाट 1 by root 5 इंटीग्रेशन ऑफ, अभी देख के आपको पता चल जाएगा ये कैसा स्क्वायर हो रहा है. करेक्ट? दिस एंटायर थिंग विल बी x minus 1 by 5 whole square. Correct?
and -1/5 होल स्क्वायर. करेक्ट. इजी है ना, सामने सामने दिख रहा है. अभी आपको पता है क्या करना है. यू कैन एक्चुअली, इफ यू वांट, यू कैन स्टॉप द वीडियो, सॉल्व इट योरसेल्फ एंड देन चेक इफ योर आंसर इज राइट और रॉन्ग. सिंपल फॉर्मूला का यूज है यहाँ पर. एक बार आप फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लेने के बाद द क्वेश्चन डजंट रिमेन सो डिफिकल्ट. 1/√5. चलो, इंटीग्रेशन ऑफ dx, सॉरी, इतना तो हो गया ना. सो नाउ वी आर गोइंग टू से let x minus 1/5 equals t. So therefore what? Therefore dt equals dx. अब तो बच्चों का काम हो गया, हमारे लिए पता है हमको क्या करना है. करेक्ट. तो नाउ सब्स्टिट्यूट करो. 1/√5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इसको क्या लिखेंगे, t स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर dt. परफेक्ट. अब फॉर्मूला बताने की जरूरत है. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, आपको पता है क्या है ना. इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रूट ऑफ. तो इस तरह के लॉग ऑफ रूट पहली बार कर रहे क्या हम. रूट कौन लिखेगा यहाँ पर, मैडम. मैडम जी रूट भूलते हैं बार बार. इसको आई हैव टू राइट दिस, वन सेकंड. मैं बार आई फॉरगेट द रूट विच इज समथिंग नॉट dx, and then you write like this, and then you have the root, and you have x minus 1/5 the whole square minus 1/5 the whole square. Similarly here also we have to put the root there. So this is going to be root. This is going to be x. So this will be t square minus 1/5 whole square. Correct. तो आई थिंक रूट का फॉर्मूला पहली बार यूज कर रहे हैं प्रॉब्ली हम लोग. करेक्ट. दिस इज इक्वल टू बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग 1 integration of 1/√of x square minus a square dx. What is that? This is equal to log of modulus x minus root of x square minus a square modulus plus c. Correct. This is what we are going to use. I'm going to cut it off from here. Reference के लिए है ये. Correct. So that is, it may not be a part of the sum. This is what we are going to use. Correct. पार्ट ऑफ सम यू हैव टू मेक इट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग. जब आप खुद करते हो तो आपको ये पार्ट ऑफ सम बनाना चाहिए. पेपर में नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं जाएगा आपका. करेक्ट. लेकिन अगर अभी नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा, फिर पेपर में मुश्किल हो जाएगा. करेक्ट. ओके. सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू राइट हियर. सो दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज. देन हाउ डू वी यूज, हाउ आर वी गोइंग टू डू इट. सो दिस विल बी 1/5, 1/5 नो 1/√5, 1/√5 1/√5 को कॉमन लिखेंगे एंड देन टू ब्रैकेट विल हैव लॉग ऑफ मॉड्यूलस x के जगह पे क्या आएगा, t प्लस रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1/25 मॉड्यूलस प्लस c. करेक्ट. अभी दिस इज गोइंग टू बी 1/√5. okay, 1/√5 going to be log of मॉड्यूलस t के जगह पे क्या आएगा, x minus 1/5, because that's the formula. अपना x is equal to 1/5. करेक्ट. एंड इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपना आया है 5x स्क्वायर माइनस 2x है. करेक्ट. तो हम लोग उसको डायरेक्टली एक्स स्क्वायर माइनस, we can write here as x square minus 2x/5. करेक्ट. एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से आया है ना, तो डायरेक्टली वही लिख सकते हैं हम. करेक्ट. प्लस सी. राइट. आई थिंक दैट्स व्हाट द आंसर इज. दिस इज व्हाट इट इज. वी कैन लीव इट हियर. दिस इज योर आंसर. ज्यादा कुछ हमको समझा. एवरीबडी अंडरस्टूड नो. सी डायरेक्टली कैसे आया ये, this entire thing we have got from here. No, इसी को solve करते करते substitute करते करते we have landed here. So we have to bring it back to the same position. Correct. So until I think until here at least 50-60% तो समझ में आ गया ना topic. Not that it's not that difficult. 60% or 50% of topic समझ में आ ही गया होगा. Right. After this we have to learn some
अभी L by Q का तो बताया नहीं ना मैंने, L by Q का क्या करेंगे, तो वो दैट वी विल सी हाउ टू फिगर इट आउट, करेक्ट। यहाँ तक just understand, go through what we did until now, and we will start with the linear equation by quadratic equation, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप यहाँ तक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अंटिल हियर, एटलीस्ट वॉट एवर वी हैव डन। आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर हाउ टू डू दिस, इज अ पार्ट 2 ऑफ 7.4, छोटा सा बनेगा वो वीडियो, बट एटलीस्ट वहां पे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस विच आर लीनियर इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई विल कीप दैट सेपरेट। दिस इज वन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा सा एक अलग करना है वहां पर, वो देखेंगे कैसे हैंडल करना है, एंड देन वी विल डू इट। तो आई मेक इट एज अ पार्ट 2, ये पार्ट 1 है। गो थ्रू दिस, अंडरस्टैंड द फॉर्मुलाज तो यही, दैट इज दिस सेम फॉर्मुलाज वी आर गोइंग टू यूज इट लेटर ऑन आल्सो, वी विल सी हाउ टू गो अबाउट इट, ठीक है। तो दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एंड हियर। until now you probably should be able to solve 50 to 60% of the exercise. Okay, solve it through, and you can then go through the next video, or otherwise you can go through both, whichever way you comfortable with, correct। तो दोनों करो, लेकिन जो भी करोगे अच्छे से करो, खुद से करो, ठीक है। और बाकी सब वीडियोस देखो, and in case if you have any doubts you can put it in the comments, and once we know, once this all the videos are done, we will see if we have time, we can get along, we can start we can meet online, and we can solve all the questions that you have doubts in, okay। Chalo then, bye you, see you guys।